Hi everyone, Ashish Kyal here. How are you doing? It's fantastic to be connecting with you. Last Friday हम नहीं मिल पाए थे because of some personal emergency. लेकिन how is the Josh? How is everyone doing? And I'm sure you are looking at the markets and thinking कि ये कहाँ जाएगा, कहाँ पर रुकेगा, यहाँ से क्या करना है, वो सब चीजें आपके दिमाग में शायद चल रही होगी. तो मैंने सोचा क्यों ना फ्राइडे 4 के बदले आज वेडनेसडे एट 4 आके बहुत ही शॉर्ट में समझे कि मार्केट पे ओवरऑल मूव क्या है, यहाँ पर क्या लग रहा है और यहाँ से कहाँ तक जा पा रहा है, जाएगा, वो सब डिस्कस करते हैं ओवरऑल सिंपल मेथड को लेके. बट बिफोर आई मूव ऑन, आई जस्ट वांट टू नो इफ यू कैन सी मी, इफ यू कैन हियर मी loud and clear, and the josh and the energy should be very high. Does not matter whether the market goes down or goes up. आपकी जो energy है, that should always be up and away. That is very very important, and only a few people are able to maintain that. क्योंकि अगर आप anxious हो गए, fear of missing out, FOMO और ये सब चीजें होगी, उसके साथ आता है साथ में ये एक बहुत strong bias कि आपने ये रैली भी मिस की, आपने ये फॉल भी मिस किया और अभी आप कुछ तो करना चाहिए. तो कुछ तो करने के चक्कर में बहुत सारे चीजें गलत हो जाती है. तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट यू अंडरस्टैंड द मार्केट बिफोर यू ट्रेड, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेरी वेरी सिस्टमैटिकली एंड क्लियरली. सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू व्हाट इज happening in the market and how we topped out, why we topped out, and lot of simple aspects of it. Plus I'll be talking something about our wave theory कि क्या हुआ, और टाइम के बारे में बात करेंगे. क्योंकि जैसे ही 17,160 का लेवल ब्रेक हुआ निफ्टी पे, एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें मिली, एंड आई शेयर दैट अक्रॉस, विच इज ऑन द बेसिस ऑफ अ सिंपल टाइम साइकिल कॉन्सेप्ट दैट वी टॉक्ड अबाउट. तो वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे. ये बहुत ही छोटा वेबिनार है, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली मैं आपको बताना चाहूंगा दो तीन चीजें. जो भी हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं ये प्योरली लर्निंग पर्सपेक्टिव से है. मैं यहाँ पर कुछ आपको बाय या सेल के बारे में नहीं बोल रहा हूँ. सेकेंडली, जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखना है, मार्केट इज सुप्रीम. सो मेनी पीपल कम एंड से मार्केट शुड डू दैट. आई नेवर टॉक इन दैट language, because if you say market should do that, which means you are expecting 100% certainty. But market is always probable, where there are novice traders who are just traded this up move or who have entered the market recently, just a month back or 3 months back. They might just be astonished. अरे यार ये क्या हो गया, अचानक से 1000 पॉइंट निफ्टी निकल गया 18,000 से 17,000, ये क्यों गिर गया, ये बाउंस बैक होगा, यहाँ से बहुत सारी चीजें होती रहती है. तो ये बहुत ही सिंपल वे में हमें देखना है, बहुत ही इजी वे में मैं एक टेक्निक आपको बताऊंगा जिससे आप ट्रेंड के डायरेक्शन में राइड कर सकते हो. Was this move predictable, which went from 18,000 towards 17,000? Yes. Was it move tradable? Yes. This was predictable, this was tradable, and it is possible for everyone to understand simple technique of time, and they could have been able to do that. So चलते हैं चार्ट पे एंड देखते हैं कि कैसे ये मूव को आप कैप्चर कर सकते थे, कैसे ये देख सकते थे. एंड it is very very important to understand those things. Jitendra is saying happiest man in the world. Congrats sir. Thank you very much for that. I am not sure क्यों लोगों के फेस पे 12 बजी रहती है जब मार्केट गिरता है या बढ़ता है या शार्प मूव आते हैं. मतलब आप ये सोचना चाहिए कि हम इस मूव को कैसे कैपिटलाइज करें, रेदर देन फाइटिंग, डिबेटिंग एंड डूइंग ऑल दोस बिजनेस. इट्स बेस्ट टू अंडरस्टैंड दैट ऐसा क्या करना चाहिए हमें कि जिससे ये मूव हम कैप्चर कर सके, कैसे हम ऑप्शंस को लिवरेज करें या कैसे हम फ्यूचर्स लिवरेज करके कर सकते हैं, या किस तरीके से देखना है मार्केट को. पहली चीज समझनी क्या है, यू शुड नेवर फाइट अ ट्रेंड. This is very important. I have seen people fighting the trend again and again and again until you get a confirmation that it is reversing. Simple method अगर आप follow करोगे, anyone knows is aware about the candlestick technique that we talk about, simple candlestick technique. Nupur is saying your tweets are too good, really helpful. Thank you Nupur. I'm sure you are enjoying those tweets before the market hours, so ensure you are following me there on Twitter. So let me now share across my chart on TradingView. I'm just going to do that.
very quickly. I'm not going to spend much time here. Let me just share it across in a second. एक second रुकिए. I am just sharing that across with you all. यहाँ पर. So I'm okay, great. This is a lunar cycle. Okay, this I'm not going to talk about lunar cycle right now. I'm going to hide my lunar cycle. I'm going to talk about a 55 days wala time cycle. That is very, very important. That is very crucial, which got broken today. In fact, if people who knows how to project price with respect to time using a concept known as FLD, future line of demarcation, अगर आप यूज करते हो तो आपने देखा होगा आज जो 16,850 16,850 का जो लेवल है, that was the FLD intersection target as per time. So I use multiple methods. I use whatever works in the market. It does not matter. And I don't care what everyone is saying. But I've been very, very vocal about one aspect of this rally, that this is a bear market rally which happened on the upside. I'm telling this for many months. अब लोगों को होता क्या है, जब वो ऊपर जाता है तो दे थिंक कि बेयर मार्केट रैली इतना थोड़ी हो सकता है, बेयर मार्केट रैली यहां तक थोड़ी आ सकता है. आई एम गिविंग यू अ सिंपल एग्जांपल. Can I say, I'm asking you, you have to answer me. If you answer me, then we will make it very interactive session. Can I say the top of Nifty was formed at 18,600 in October 2021? Again, that was predictable 7 years, 8 years back. Okay? It was predictable 8 years back, yes. October 2021 पे Nifty का top बना. Do you agree with me? Yes or no? Simple question I am asking. I want everyone to participate and tell me with a yes or no. And I'm open for discussions, right? I'm always that way. उसके बाद में, can I say Nifty went down? When it went up, it formed a lower high. Again, it went down, formed a lower low. Classic Dow theory suggests that that's a lower high and a lower low formation, which means that the trend is on the downside. Post that, we saw a move on the upside. After that, again the lower high, lower low formation continued. ठीक है, ये जो हाई बना निफ्टी पे, ये हाई बना हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते यहां पर. This is the high that Nifty formed around this level, exactly around this level where it was the high. Look at it very, very carefully. Can I say this rally again which happened was a lower high compared to this high? Do you agree with me on that? So can I say that so far, as per simple and the most important concept, which is the Dow theory, Nifty has still not taken out the highs. I agree, Bank Nifty ne nikala. See, Bank Nifty is a different beast altogether. You know, the Bank Nifty is a different animal altogether. You don't really want to, I look at Nifty for reliability because that is always much more, true to trader than Bank Nifty. So Nifty is always much more true to the trader than Bank Nifty. This is what I believe. After this has happened, I can clearly see the move that reversed back on the downside. So can I say that with your permission, is it okay if I say that this is still a structure which is a lower high and a lower low formation so far till date? Do you agree with me, all of you? Okay. When will I now change my stand to be on the bullish side? If we see a move back above this, then I can clearly say, well, this is a higher high and a higher low formation happening. This is the point which is going to take out this high near 18,130 odd levels. I will change my stand. Now you might think that is far away now, like 1100, 1200 points away. Agreed. तो मैं ये नहीं कह रहा कि वहां ट्रेड करने मिलेगा. मैं बोल रहा हूँ वहां पर हमें पता है कि अभी ये ऊपर का ट्रेंड शुरू हो गया है. So now once you know the trend, you need to know how to enter the trend. ट्रेंड पता चला, उसके बाद ट्रेंड में एंटर कैसे करना है वो देखने के लिए आप शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे जाओ. चलो ये तो एक बात हो गई. So do you agree with me? Are you okay with me if I say the rally was a bear market rally? चलेगा ना, क्योंकि नेट प्रोग्रेस ही नहीं था. सी, लोगों के दिमाग में बेयर मार्केट का मतलब क्या होता है मालूम है? 2008 का क्रैश या कोविड का क्रैश.
बेयर मार्केट का मतलब वो नहीं है, बेयर मार्केट का मतलब होता है ओवरऑल मार्केट करेक्शन में है, ठीक है। वी आर सीइंग हियर प्राइस करेक्शन तो हुआ, साथ में टाइम करेक्शन हुआ, we can clearly see that, and that's why I say this is a this was a bear market rally, and I'm not seeing it now after the fall has happened. I've been always saying that this is a bear market rally, but I was not admitting it openly to everyone because I know what if the bulls are going to do when I say this is a bear market rally. When the market rallied by 1,000-2,000 points, they will be like trying to stamp all over the place. तो वो जाने दीजिए, चलते हैं अभी समझने के लिए सिंपल ट्रेंड का मतलब. If I am here, if I go on the weekly chart of Nifty, in fact let's go on a monthly chart of Nifty because we are nearing the month end. If I go on the monthly chart of Nifty, what a rejection that we got from the top. Okay, rejection and the close below the prior month low is what we can clearly see. If I go to the weekly chart of Nifty, we can see a clearly lower high lower low formation. इसके बारे में मैं अभी नहीं जा रहा बिकॉज इसके बारे में हम बहुत डिटेल्ड में डिस्कशन करेंगे संडे को. यहाँ पर आई एम नॉट गोइंग हियर. सो ये संडे हमारा एक फ्री वेबिनार है, उसमें मैं बहुत डिटेल में आपको बताऊंगा कैंडलस्टिक के बारे में. If I go to the daily time frame, now is the important aspect of it. If you're looking at this daily candle, see first thing always start with the candle. What do you see is happening here? क्या आपने मेरा वो वीडियो देखा था कैंडलस्टिक प्रोफाइल पे? एक मैंने वीडियो बनाया था 20 मिनट का. डिड यू सी दैट कि कैसे कैंडल के प्रोफाइल को अंडरस्टैंड करना चाहिए? इफ यू सी दिस, यू कैन क्लियरली सी देयर इज अ ह्यूज रिजेक्शन फ्रॉम द टॉप. आज के दिन में मार्केट ने अटेम्प्ट किया, रिजेक्ट हुआ, बुल्स गेव अप फॉर श्योर. 17,000 पे कॉल ओआई शार्पली राइज, पुट ओआई कम होने लगा, मतलब पुट सेलर्स पैनिक हो रहे और यहां पर बुल्स का कोई काम ही नहीं है. दिस इज सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज, सेल ऑन राइज. आई हैव बीन टेलिंग दिस since the fall started from around 17,600 odd level. That is what I have been talking about, sell on rise, and I'm still saying that. But tomorrow, if Nifty comes and closes about today's high, which is 17,040 के ऊपर close चाहिए end of the day, I will change my stand. I will start booking the profits. I'll change my stand at that point of time, but not earlier. We don't want to fight that trend. Now, with respect to time, very importantly that you have to understand with respect to time, the most important aspect is that in this is a time cycle which I have been following for decades. Okay, 55 days ka time cycle. You can clearly see those cycles being plotted around this area. The final cycle line low was on 29th of August. साइकिल का मतलब होता है कि अगर ये लो निकल गया, okay, so how is the cycle looking like? You want to see how the cycle looks like? Let me just show it to you. Let me just explain it to you in terms of cycles. Now I'm talking about time, and this is something very phenomenal. यहाँ पर अगर मैंने टाइम के बारे में बात की आपसे, ये साइकिल से लेके until this cycle, ठीक है. Can I say this is the low of the cycle, the zone of the cycle which I have plotted? यहाँ पर जोन था, यहाँ लो बना, यहां से मार्केट रैली होना चाहिए था, रैली हो गया, फिर ये जब लो निकल गया, इसका मतलब साइकिल हैज नाउ टर्न्ड ऑन द डाउन साइड until the next low, which is going to be here. So this is what the cycle is suggesting. Time is supreme. Until you know the time, you can't really trade. So this is what cycle is suggesting. यहाँ पर लो बनेगा. ये डेट चाहिए आपको, कौन से डेट पे लो बनेगा? Do you want to know the date? चलिए देखते हैं. ये डेट है 4th of November. If you check my tweets, my research articles on wavestrategy.com, I've been talking about this date for some time. And I've also talked about this level. Why? Because if this cycle has topped out, it indicates a left translation. This is for time cycle enthusiasts to understand. इसका मतलब लेफ्ट ट्रांसलेट हो गया. इसका क्या इंडिकेशन हुआ कि जो 18,000 का लेवल है वो 4th of November तक नहीं निकलेगा एज पर दिस साइकिल एनालिसिस. मतलब मार्केट ने टॉप बना दिया एटलीस्ट ओवर 4th of November. Now the question is not about the top, which has already happened. I know the point is क्या फर्क पड़ता है, 18,000 तो बहुत दूर है. Ask option sellers if they have this information. It's very important. Now यहाँ से
बॉटम कहां बनेगा या लो कहां बनेगा। पहली चीज, इफ यू हैव अ शॉर्ट पोजीशन, डू नॉट ट्राई टू कैच अ लो, डू नॉट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग लाइफ नाइफ, बोलते ना, नॉट लाइफ, डू नॉट ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। इसका क्या मतलब है कि जो गिर रहा है इतने तेजी से, उसे पकड़ना नहीं चाहिए, उसे राइड करना चाहिए ना। हाउ डू यू राइड इट? जब तक प्रीवियस डे हाई के ऊपर क्लोज नहीं होता, यू कीप राइडिंग इट। नाउ योर इंटेंशन इज टू ओनली फाइंड आउट हाउ डू यू स्वीप इनसाइड द ट्रेंड। जैसे आज पुल बैक आया मार्केट में, जैसे ही पुल बैक आया, उसने नेक्स्ट कैंडल का अवरली कैंडल लो निकाला, वी क्रिएटेड शॉर्ट पोजीशंस ऑन द कॉल। इनफैक्ट वी गिव शॉर्ट कॉल्स आल्सो टू द क्लाइंट्स ऑन निफ्टी बेसिस ऑफ दैट। नाउ बिकॉज ऑफ द वोलेटिलिटी, अगर कल ऊपर खुल के फिर नीचे आ गया, स्टॉप हो जाता है, बट यू हैव टू लिव विद दैट, दैट्स द पार्ट ऑफ इट। वोलेटिलिटी ज्यादा है। आई एम अगेन रिपीटिंग, यू गो ऑन एन आवरली चार्ट, 1 आवर चार्ट पे जाओ, look at certain aspects of techniques or tools, maybe Bollinger Bands, maybe channel, maybe this is the channel that you can use, or there are a couple of ways to do that. Once you have the area of significance, wahan se reversal mila, that will indicate you need to enter that trend. So this was the indication that you need to enter on the short side. Did we enter on the short side? Yes, we even told our clients to go short there on Nifty basis of this simple technique. Why? Because I know these pullbacks are temporary. These pullbacks are temporary. Until when? Until we see a close above previous day high. As simple as that. Okay. Now from that perspective, this is on the sell side. Once you know how to enter the trend, दो चीज करनी है आपको। पहले तो ट्रेंड क्या है पता करना है। कैसे पता किया? सिंपल कैंडलस्टिक से, जिसके बारे में मैं संडे को बताऊंगा। सेकेंडली, ट्रेंड पता होने के बाद में एंटर कैसे करना है, वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाना है और वहां पर एंटर करने की कोशिश करना है। यू कैन यूज टाइम साइकिल्स, यू कैन यूज न्यू वेव टेक्निक्स, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड नो टाइम, बिकॉज फॉर मी द टाइम विल रिमेन ऑन द सेल साइड until tomorrow, which is going to be around 12:30, around 12:30 I'm saying 12:30 to 1 p.m. तो अगर बाइंग आनी है मार्केट में तो कल के सेकेंड हाफ में आएगी, सुबह आने का चांसेस कम है। दैट इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। दिस इज ऑफ टाइम, लेकिन प्राइस और टाइम कॉन्फ्लुएंस होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या होता है मालूम है? काफी सारे जन आधी चीज सुनते हैं, आधी चीज करते हैं और आधी चीज भूल जाते हैं। उसमें होता क्या है, पूरा एक मिक्सचर बनता है और आउटकम वही होता है जो आपका बायस है। अगर आप बुलिश हो तो आपने बुलिश सुना और वही किया, आप बेरिश हो आपने बेरिश सुना और वही किया। तो मैं आपको इसलिए वही बता रहा हूँ बार बार कि समझ के ठीक से सुन के अगर आप करोगे ट्रेड तो पैसा बनेगा। अभी यहाँ पर टारगेट्स कैसे डिराइव करने हैं हमें, नीचे की। नाउ फॉर दैट आई विल कम टू द एस्पेक्ट ऑफ वेव थियरी। फ्रॉम माय वेव थियरी अंडरस्टैंडिंग, दिस एंटायर राइज दैट वी सॉ, ये पूरा जो राइज था, दिस कुड हैव बीन अ डबल करेक्टिव पैटर्न और अ ट्रिपल करेक्टिव पैटर्न। एज पर दैट कॉन्सेप्ट, the retracement that we are going to see from here is going to be around the zone of 61.8 to 76.4% Fibo retracement. That gives me the target for Nifty as 16,300. Now 16,300 से लेके 15,900, 76.4 है, 15,900 के आसपास। That is my target zone for Nifty for this fall. It does not mean कि ये यहाँ से डायरेक्ट उधर जाएगा, बीच में रुक भी सकता है, नहीं भी रुक सकता है, दोनों ही चीज है। अगर बीच में रुका तो ये जो पुल बैक मिलेगा, दैट इज अ पुल बैक until and unless we see a move back about the retracement of 17,500 के ऊपर आ गया, तब देखेंगे कि शायद ये कुछ कंप्लीट हो गया एंड यहाँ से हमें पुल बैक मिलेगा। लेकिन 17,500 7500 के ऊपर नहीं आया, दिस इज ओनली गोइंग टू बी अ रिट्रेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ वेव बी and then we will continue the downward trajectory. So actually in fact हमने मास्टर ऑफ वेव्स के सेशन में निफ्टी का एक पाथ बनाया था, and do you guys remember that path that we have used in the master of waves session? Exactly, so far Nifty has behaved precisely as per that path that we have been looking at. Pullback possible है, but that's the path that I am talking about. Do you want to see the path? Do you want me to show the path कि क्या निफ्टी हो सकता है यहाँ से, बेसिस ऑफ टाइम साइकिल, बेसिस ऑफ वेव थियरी, क्या यहाँ से मार्केट में पुल बैक आएगा तो कितना आएगा, और नहीं आया तो कहां तक जा सकता है,
Do you want to see that? All those things. लेकिन do you promise me one thing? You don't just buy the story. आप खुद का होमवर्क करके एनालाइज करके अगर कल मार्केट रिवर्स हो गया और मैं बुलिश हो गया, you don't come back and start saying because of you I lost money. Boss, this is your money. You need to see, you need to learn, and you need to practice it. You don't have to blame anyone. If you go into the blame game, because of US we are falling, because of China we are falling, because of inflation we are falling, because of RBI we are falling, then you don't make money by trading. You only find out news, you only find out events why we are falling. Your aim is not to find out events, your aim is to find out why we are falling. No, your aim is to find out how do we enter the trend. हम ट्रेंड में कैसे एंटर करें, that is your intention, not anything else. Are you understanding? So don't hold me responsible if market reverses. I am not moving the market. In fact, I am following the market. If market reverses, I reverse. If market continues to go down, I continue to go down. That's what I do. So chaliye, let me just quickly share across very quickly the path that I'm expecting Nifty to follow. That's the path that is possible. तो मेरा पहला टारगेट है, हमने ये डिस्कस किया था मास्टर ऑफ वेव्स के ट्रेनिंग सेशन में, which was I think about 2 weeks back. बराबर है, जब निफ्टी कहा था 17,500 के आसपास था, एंड लुक एट इट, द वे इट बिहेव्ड इज सिंपली सुपर. यहां से नीचे आया, अभी हम कहां पर है मालूम है? अभी हम यहाँ पर. दिस इज वेयर, दिस इज द जीपीएस ऑफ द मार्केट. This is where we are right now, standing there at that point of time. This is derived not now, this was done 2 weeks back when Nifty was just starting to fall. This is what we expected, and we behaved very, very precisely, and we are right now here at this point of time. यहाँ पर हम है, यहाँ से पुल बैक हो सकता है, डीपर आ जाए तो फॉल थोड़ा शैलो हो जाए. तो मेरा जो टारगेट पहला था 16,890 जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना, वो अचीव हो गया. मेरा नेक्स्ट टारगेट जो है, जो मैंने बताया 16,300, 61.8% लेवल है. सो वन स्टेप एट अ टाइम. आई एम नॉट ट्राइंग टू डू एनीथिंग. इफ टुमारो इट रिवर्सेस, आई विल change my stand with a blink of an eye. That's my target zone. This is my target zone. But I'm not trying to catch a low here. I'm trying to ride the trend. And if you don't ride the trend, you have to just simply sit tight. That's when the best of the money can be made if you do that. Are you understanding what I'm trying to tell here? समझ में आया कुछ? So that is what the thing is. And बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें ये लगता है कि यार ये चीज चलती नहीं है, वो चीज चलती नहीं है, ये काम का नहीं है, वो नहीं है. बॉटम लाइन क्या है? जो आपके लिए काम करता है वो चीज यूज करो और उन लोगों को फॉलो करो जो आपके लिए वर्क करता है. प्रॉब्लम क्या है? हम उन लोगों, सब लोगों को फॉलो करते हैं जिनको हम ट्रस्ट ही नहीं करते. सो क्या होगा उसका आउटकम? यू एंटरटेन योरसेल्फ बाय डूइंग दैट. डोंट एंटरटेन योरसेल्फ. दिस इज सीरियस मनी मेकिंग बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग. In this, there is no question of entertainment. So you need to ensure to maintain your sanctity, maintain your stand. Don't have that fear of missing out. And if you do that, I am telling you, you can make a lot of money. So that is possible. चलिए, ये तो पाथ था, मैंने बताया, लेकिन ये पाथ अभी तक वैसा है. इसका मतलब ये नहीं आप कल जाके शॉर्ट करो. मैं वही बता रहा हूँ, पुल बैक आ सकता है, शार्प हो सकता है, ओवरसोल्ड है, लेकिन ओवरसोल्ड का मतलब नहीं कि गाड़ी 100 की स्पीड पे जा रही है तो 80 रिवर्स लेगी. खाली इसका मतलब है थ्रॉटल हो सकता है और यहां से शायद पॉज हो सकता है, शायद. तो वो वन स्टेप एट अ टाइम. यू शुड ओनली मैनेज रिस्क, नॉट मैनेज एनीथिंग एल्स. मैनेज योर रिस्क एंड मैनेज योर इमोशंस. बहुत सारी चीजें आपको सीखने मिलेगी. चलिए, बिफोर आई डन फॉर द दिस थिंग, टाइम साइकिल लो ब्रेक हो चुका है. इसका मतलब 4 नवंबर तक वापस से निफ्टी का साइकिल जो टॉप बना था वो नहीं निकलेगा. ये हमने देखा ये वाले चार्ट से. प्रीवियस आज के कैंडल का हाई के ऊपर अगर क्लोज होता है तो बुलिश व्यू शॉर्ट टर्म के लिए पुल बैक आ सकता है. अगर नहीं हुआ तो एक्सपेक्टेशन यही है कि यहाँ से करेक्शन कंटिन्यूड रहेगा, माइनर पुल बैक, देन वी कंटिन्यू टू फॉल ऑन द डाउन साइड. दैट इज व्हाट माय एक्सपेक्टेशन इज from the market. This is what I am seeing it should have, not should, can happen. Okay, मुझे वर्ड्स थोड़े संभल के यूज करने पड़ेंगे क्योंकि बहुत सारे जन उसे इनकरेक्टली इंटरप्रेट कर लेते हैं और मैं नहीं चाहता कि आप इनकरेक्टली इंटरप्रेट करें. सो क्या आप ये जो मैं बता रहा हूं, क्या आप ये सीखना चाहते हैं मेरे साथ में?
रह के कि ये टाइम क्या है, हम किस तरीके से शॉर्ट टर्म साइकिल को प्रेडिक्ट करें। जैसे मैं बता रहा हूँ कि कल सेकेंड हाफ में अगर बाइंग आ सकती है, फर्स्ट हाफ में तो सेलिंग है, तो ये कैसे प्रेडिक्ट किया। और एक और चीज, बाइंग नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि ये चलता नहीं है। इससे और एक इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो टाइम के बेसिस पे। लेकिन अभी समय का अभाव है, I will not be able to explain it to you all the things. What I am going to do is, do you want to learn this science? If you say with a big yes, then I can teach you for 2 hours on how to look at time. आज तक आपने सुना होगा how to look at price. I will teach you how to look at time. Do you want to learn that? तो अगर आपको सीखना है तो on Sunday, which is 2nd of October, Gandhi Jayanti also, I am going to be talking about how to look at time in my webinar, which is going to happen. So why don't you take that step forward, register for that webinar. In this link, for 2 hours I am going to teach you about the concept of time, and you will be amazed to see यार क्या fabulous concept है, जिसे कैसे यूज किया जा सकता है, कैसे करना चाहिए। तो वहां रजिस्टर करिए और वहां से आपको लिंक मिलेगी यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहां रजिस्टर करिए एंड यू विल लव इट। वन मोर थिंग, if you enjoy this session, then ensure you like it so that I can do more frequent sessions. So click on that like button, तो मुझे पता चले कि यार आपको इस तरीके का कंटेंट चाहिए। और आप कमेंट सेक्शन में जाके ये मेंशन करिए कि आप क्या सुनना चाहते हैं, मतलब कौन से टॉपिक पे। आई कैन टॉक अबाउट टाइम, आई कैन टॉक अबाउट न्यू वेव, आई कैन टॉक अबाउट इन्फ्लेशन, आई कैन टॉक अबाउट इकोनॉमिक्स। तो आप क्या देखना चाहते हैं, आप क्या सीखना चाहते हैं, दिस इज प्योरली लर्निंग आई एम टॉकिंग अबाउट। और हिंदी इंग्लिश मिक्स होगा ये वेबिनार जो मैं करने वाला हूँ संडे को 2nd of October को। दिस इज गोइंग टू बी इन हिंदी एंड इंग्लिश मिक्स। यू गो एनरोल योरसेल्फ, जूम का एक लिंक मिलेगा और वो जूम के लिंक पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, जूम पे हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आपको यहाँ से ट्रेड करना चाहिए, कैसे आपको निफ्टी पे लो या टॉप पकड़ सकते हो टाइम के बेसिस पे। वो सब चीज हम बात करेंगे, विच इज ऑन संडे 2nd of October at 11 AM. So be there on time. You can do it if I can do it. That's the aim and that's what we want to do. चलिए चलते हैं, अभी आज के लिए इतना ही है। हम डिस्कस करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में और काफी सारे टॉपिक्स मुझे मिल रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में डालिए, चैट में नहीं, कमेंट में डालिए, तो मुझे पता रहेगा कि आपको क्या सीखना है। ओके, तो कमेंट में डालिए और लाइक करिए इस चैनल को और सब्सक्राइब भी करिए, सो दैट एटलीस्ट आई नो you want to learn and you are serious traders. You are not someone who is here to simply entertain yourself. You want to become a fearless trader, confident trader, and not someone with a very, very low on energy. Look at me. It does not matter whether the market goes up or down. Does not matter whether I make money or I lose money. What matters is, am I following my process? And I'm doing that very well. So there are people who are also, trying to say that a lot of things, this does not work. It works. If you trust me, I'll take you there, but you have to trust me on that. It works and this is wonderful. It is wonderful. If you have something so phenomenal and so wonderful, you want to share it across with the world, right? So if you are liking this session, let me know. So we will do Friday at 4 again if you enjoy it. So that market में क्या होगा आगे देखेंगे। चलिए, thank you very much guys. शब्बा खैर, आशीष क्याल साइनिंग ऑफ। और संडे अटेंड करना, 2 घंटे का वेबिनार नहीं भूलना। लिंक मैंने शेयर किए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहां से आपको डिटेल मिल जाएगी। वहां पर जाइए, स्टेप लीजिए और रजिस्टर करिए। जूम पे हम वो वेबिनार करेंगे, तो एंश्योर यू रजिस्टर योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच श्री कृष्णा जोशी, थैंक यू एंड इट्स प्लेजर टू सी दैट। और हमारा अच्छा संडे का क्या क्या सीखने वाले, संडे हम कैंडलस्टिक करेंगे और पूरा फोकस टाइम पे होगा। ये 2 चीज करने वाले, कैंडलस्टिक एंड टाइम। So these are the 2 topics which we will have on Sunday, free webinar exclusively for you people. Thank you. Ashish Kyal signing off and see you again on a Sunday.